नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, आज तुम लोग को ये व्हाइट बोर्ड में दिखाई दे रहा है। इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जो तुम लोग का क्लास 8 के लिए है। क्लास 8 का टर्म टू एग्जाम में ये लास्ट चैप्टर है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इस समय हम वही टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन क्या है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है एंड उसका एप्लीकेशन क्या है, उसको लेकर कैसे कैसे प्रॉब्लम में ये यूज होता है और कैसे कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट उसका एग्जाम्पल लेके डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का इस चैप्टर का एग्जाम्पल लेके हम उसका डिस्कशन करेंगे। जैसे कुछ चीजों में होता है, एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ता है और एक क्वांटिटी कम होने से दूसरा क्वांटिटी भी कम होता है। और कुछ चीजों में होता है, एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी कम होता है और एक क्वांटिटी कम होने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ता है। सो हम पहले फर्स्ट केस में ये डिस्कशन करेंगे। जैसे सपोज हमने एक किताब का किसी भी एक किताब का दाम सपोज ₹100 है। सो दो किताब का कितना दाम होगा, सेम दो किताब का दाम कितना होगा? अगर दो है तो दो किताब का दाम 200 होगा। अगर वही तीन किताब है तो उसका दाम 300 होगा। अगर चार किताब है तो उसका दाम 400 होगा। अगर 8 किताब है, if there are 8 number of books, then this amount will be 800. Okay. So what we have observed here? So यहाँ में लिखा जाता है, अगर हम ये फर्स्ट क्वांटिटी को नंबर ऑफ बुक्स को हम x वेरिएबल से डिनोट करेंगे। सपोज दिस number of books is represented by the variable x and the price of each book is represented by वेरिएबल y। अब क्या देखा जाता है, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली यू फाइंड दैट इफ यू डिवाइड दिस, इसको इससे डिवाइड किया जाता है, दैट मींस x बाय y हम निकालेंगे। हर टर्म का x बाय y निकालने से इसका कितना होगा 1/100, इसका कितना होगा 2/200। 2/200 मींस 1/100। इसका कितना होगा x by y 3/300, दैट इज 1/100। सिमिलरली इसका कितना होगा 4/400, दैट इज 1/100। और इसका कितना होगा 8/800, दैट इज 1/100। सो इन इस केस x by y is 1/100, 1/100, 1/100, 1/100, 1/100, 1/100. This x by y is fixed here. Here x by y is fixed here and it is 1/100, 1/100. That is x by y is fixed. और मैथमेटिक्स में this fixed टर्म को, this fixed सिचुएशन को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट जो ध्रुवक राशि होता है। So x by y is constant. It is written or it is read like x by y is constant. Here in this case x by y is 1/100, that is x by y is constant, that is x by y is fixed. इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन शॉर्ट डीपी। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जहां एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है और वो रेशियो सेम है। यहाँ में रेशियो सबका 1/100, 1/100, 1/100, 1/100 रेशियो सेम है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है x by y इक्वल टू कांस्टेंट। और हम इस कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन को जनरली एक लेटर से डिनोट करते हैं एंड दिस लेटर इज सपोज हियर k। In mathematics, generally constants are denoted by some letters, that is some variables, and here this variable is k.
and it is called direct proportion where x by y is constant. That is where x by y is k. That is ratio of corresponding quantities is fixed. X by y is fixed. This is direct variation. Sorry, इसे को डायरेक्ट वेरिएशन भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं. इसका दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे एक पेन का दाम 7 रुपीस है, दो पेन का दाम 14 रुपीस होगा, तीन पेन का दाम 21 होगा. इसमें क्या होगा 1/7, 2/14, 3/21, all this ratio is 1/7, 1/7, 1/7, and this is also a case of direct proportion. That means एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, वही है. और सिमिलरली हम उल्टा से देखेंगे. सपोज एक किताब का दाम 800 है, तो 4 किताब का दाम 400 हो गया, 3 किताब का दाम 300 हो गया. ये अगर कम हो रहा है, ये अगर ऐसे कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है. और यहां से हम ऐसे देखेंगे, तो यहां से ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, वन क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ता है, या फिर दूसरा क्वांटिटी कम होने से पहला क्वांटिटी कम होने से दूसरा क्वांटिटी भी कम हो रहा है, बट इन ए फिक्स्ड रेशियो, in a fixed quantity, and this fixed quantity is called constant, and it is generally denoted by some letter, some variable k. अभी हम दूसरा केस डिस्कशन करेंगे, that is inverse proportion. So we will now discuss inverse proportion. So we have just learned what is direct proportion dp, where x by y is constant. Now x by y is constant is a mathematical expression. And what is the mathematical expression for inverse proportion? And before that, what is inverse proportion? So let us take some example. Let us take some suitable examples, some functional examples, such that we can simply learn, simply understand what is inverse proportion or indirect proportion or variation. This proportion term is in some books it is written as variation. So variation and proportion is same. Suppose speed of one car is suppose 40, and 40 किलोमीटर पर आवर में एक जगह से सपोज वन प्लेस से एक प्लेस से दूसरा प्लेस जाने में 4 आवर्स लगता है. 4 आवर्स 40 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है गाड़ी, तो उसको ए से बी प्लेस पहुंचने में 4 घंटा लगता है. अगर यही स्पीड 80 हो गया, डबल हो गया, यही स्पीड डबल हो गया, तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? स्पीड बढ़ गया तो कम समय, पहले से कम समय में ये डिस्टेंस कवर करेगा. दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विल बी कवर्ड इन लेस टाइम देन द प्रीवियस स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. तो यहां में हो जाएगा 2. वही स्पीड 80 नहीं होगा, 160 हो गया, 160 किलोमीटर पर आवर. बट इट्स अ हाइपोथेटिकल थिंग दैट जनरली कार कैन नॉट ट्रेवल 160 किलोमीटर पर आवर, बट वी आर supposing it is traveling in 160 kilometer per hour. Then the time taken, because it is a very large speed, it is larger speed than 80 or larger speed than 40, then this time will be what? This time will be what? Okay, 40 किलोमीटर आवर जाने में 4 आवर्स लगता है, 80 किलोमीटर पर आवर में जाने से 2 घंटा लगेगा. स्पीड बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, स्पीड और बढ़ गया तो समय और कम लगेगा. तो इसमें सपोज हम ये जो स्पीड है इसको हम वेरिएबल x से डिनोट कर रहे हैं, और जो टाइम लग रहा है वो टाइम को सपोज हम वेरिएबल y से डिनोट कर रहे हैं. तो यहां में हम लोग निकालेंगे. सो हियर वी विल डिराइव x into y, x into y. xy means in algebra, xy means x into y. X into y in each case. In the first case, x into y, that is x is 40 and y is 4, that is 40 into 4. 40 into 4, that is 160. 160. In the second case, it is 80 into 2, it is 160. In the third case, it is 160 into 1, it is 160. Here you see, here x into y, xy is 160, 160, 160 in all the 3 cases. In all the 3 cases, it is 160, 160. Suppose it is 320. 320 is the more the hypothetical thing, then it will be definitely half hour. Then this is a half hour. And this here will be 320 into half, it is also 160. So in any case x by y is fixed value, 1/60, 1/60, 1/60.
So here in this case, this type of proportion is called inverse proportion. यही है inverse proportion. This is called inverse proportion. And in inverse proportion, mathematically xy is constant. Xy is, for this example, here xy is 160, 160, 160, 160, or anything. If you take any other speed more than or less than, then corresponding xy will be 160, 160, 160. So here x into y, xy is constant. Constant. We can take any variable. Suppose in the previous case we are taking k, so here we can take m here. M is a variable, and which is a constant. Which is a constant. Xy is equal to constant, which is m. So here it is called inverse proportion, IP. So it is IP. That is, it is inverse proportion. That is, it is inverse proportion. It is inverse proportion. In short, it is IP. So in inverse proportion, this mathematical expression is xy is equal to constant. So now we will take some examples to elaborate, demonstrate how to deal with direct proportion and inverse proportion. So in direct proportion, x by y is constant, and in inverse proportion, xy is constant. These are the mathematical expressions of direct and inverse proportion. अभी हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन करेंगे और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन करेंगे. सपोज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में ये इट इज आस्क्ड ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? So 840 bottles 6 hours में fill किया है, तो 5 hours में कितना bottle होगा? So first you have to identify whether it is a direct proportion or indirect proportion. 840 bottle 6 hours में होता है, मतलब 6 hours में 840 bottle fill up होता है, तो 5 hours में वो proportionally कम होगा. 6 to 5 कम हो रहा है, तो number bottles भी कम ही होगा, क्योंकि कम समय में कम बटल ही फिलअप होगा. सो इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इट्स ए केस ऑफ डीपी. सो हियर वी विल राइट लाइक दिस. अगर 840 है, अगर 840 है तो यहां में नंबर वर्ड 6 है, और ये 5 आवर्स है. अगर ये 5 आवर्स है, सो हाउ मेनी बटल्स, यहां में बटल कितना होगा? सो 6 आवर्स में इतना होता है, 5 आवर्स में कितना होगा? सो ये कम हो रहा है और बटल भी कम ही होगा. जितना टाइम कम होगा, टाइम कम हो गया तो बटल भी कम ही होगा. सो इट इज ए केस ऑफ डीपी. सो डीपी में क्या होता है? ये x होता है और ये y होता है. सो x बाय y इज कांस्टेंट. सो सपोज हम अननोन वैल्यू को p लेते हैं. अननोन वैल्यू को, दिस अननोन नंबर बटल्स इज p सपोज. देन हियर x by y here this and x by y is here, this ratio is same. So here x by y is 840 by 6, which is equal to this one. This one is p by 5. X by y for this expression and x by y for this one will be same because it is direct proportion. So x by y is this. Here x by y is this. Here x by y is this. These two terms are equal. So if we simplify this, before this 6 one time, 6 4 time, it is 140. 140 is equal to p by 5. Implies p is equal to 140 into 5. 0 0 0 700. So it is 700. You see? So here for 6 hours it can fill up 840 bottles. For 5 hours it can fill 700 bottles, which is less than 840. So our workout is correct. So like this we can do the problems of direct proportion. The mathematical expression will be x by y is constant. So for the first case x by y, whereas for second case
x by y will be evaluated and they are equated and then simplified and we have find out value. So अभी हम दूसरा एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 11.2 एक्सरसाइज 11.2 का एक क्वेश्चन करेंगे. सो एक्सरसाइज 11.2 इज ऑन अ टॉपिक इनवर्स प्रोपोर्शन. सो यहाँ का एक क्वेश्चन हम लेते हैं सपोज क्वेश्चन नंबर 5. Suppose question number 5. So in the question this asks, a farmer has enough food to feed 20 animals in his kettle for 6 days. How long would be the food last if there were 10 more animals in the kettle? So 20 animal के लिए 6 days का खाना है. अगर वो एनिमल 20 ना होकर 10 more हो गया मतलब 30 हो गया तो कितना दिन के लिए खाना बचेगा? तो 20 तो इसको एनालाइज करना है. 20 एनिमल के लिए 6 दिन और 10 एनिमल ज्यादा आ गया तो 30 एनिमल ज्यादा हो गया तो खाना कम दिन जाएगा या ज्यादा दिन जाएगा? एनिमल ज्यादा हो गया तो वो लोग ज्यादा खाएगा तो वो नंबर ऑफ डेज विल बी लेस. तो नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेस बट नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस. सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. सो फर्स्ट वी विल tabulate the data. So here 20 animals and it is number of days 6. How long would it food if last there are 10 more animals in the kettle? 10 more animals, that is 20 becomes 30. 20 becomes 30. अब इस केस में नंबर ऑफ डेज कितना होगा? 20 डेज 20 एनिमल्स के लिए 6 दिन जाता है तो 30 एनिमल के लिए ज्यादा एनिमल हो गया तो नंबर ऑफ डेज कम होगा. ये बढ़ रहा है लेकिन ये कम होगा. सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. IP. So suppose this unknown value को हम लोग m लेते हैं. m. This unknown value is suppose m which is to be evaluated. And mathematically this is represented as x. These are x and these are y. And we have seen that it's a case of inverse proportion. So and we know that in inverse proportion x into y, xy is constant. xy is constant. xy in each case here there are only two cases. X into y, xy is equal to this. For this two pairs xy and for this pair xy will be same. And for this pair xy will be 20 into 6. 20 into 6 is equal to, and for this pair it is 30 into, here unknown value is taken to be m. So it is m. So 20 into 6 is equal to 30 into m. This is the expression for this problem. And it is the expression for inverse proportion. If we simplify this, m will be 20 into 6 divided by 30. 0 0 cancel. 3 2 times 2 into 2 4. You see m becomes 4. ये बढ़ गया, ये इंक्रीज हो गया लेकिन ये डिक्रीज हो गया. So it is a case of inverse proportion and it is correct. It is 20 into 6 120, 30 into 4 120. It should be same. So like this you can do the problems of direct proportion and inverse proportion. And this chapter is nothing but on these two mathematical expression. X by y is equal to constant for direct proportion and xy is equal to constant for inverse proportion. अगर तुम लोगों को ये मालूम है, ये करना मालूम है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मालूम है तो कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 या एक्सरसाइज 11.2 का कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो. और ये प्रॉब्लम ही नहीं है एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम ही नहीं. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे आफ्टर 12 आल्सो फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर जॉब रिलेटेड एग्जाम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो तुम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक एप्लीकेशन अगर करना आता है तो कोई भी प्रॉब्लम तुम लोग कर सकते हो. तो हम लोग इस क्लास में ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हर एक्सरसाइज का एक एक प्रॉब्लम डिस्कस किया. उसी प्रॉब्लम के दायरे में बाकी जो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है, उसको समझना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है. इसके बाद जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें वो पुट कर देना है. अगर डायरेक्ट है तो x by y is equal to x by y वो फॉर्म में जाना है. अगर इनडायरेक्ट है तो xy is equal to xy वो फॉर्म में जाना है. So dear students, nothing to say more. So इसी तरह तुम लोग का ये लोग लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का क्लास 8 का 2024-25 सेशन का सीबीएसई बोर्ड्स के स्कूल के लिए जेएनवी हो या केवी हो, डीपीएस हो, जो भी सीबीएसई एनसीईआरटी का स्कूल है. तुम लोग ये जो लास्ट चैप्टर है किसी किसी स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट या फिर अनफेमिलियर लगा था कॉन्सेप्ट को लेकर, नाम से ही अनफेमिलियर है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है. हम लोग को आराम से इसको समझ के इसको हम उसको हिट कर सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं. उनसे डरना नहीं है.
So we have nothing to worry about, and we have to follow this, and they will follow us. Okay? Thank you for this class.